Welcome at Newcastle Training Center. This is your trainer Shahzad Anwar. आज की ट्रेनिंग में आप ये देखने जा रहे हैं कि हम अपने डेटा को VLOOKUPS फंक्शन की मदद से हम कैसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, बिजनेस में हमें इसकी बहुत नीड रहती है कि हमारे पास लार्ज वो रिकॉर्ड्स। ओके, समवन पिक्स अ फोन फॉर यू और आपको कहते हैं कि अच्छा मैंने आपके साथ रजिस्ट्रेशन करवाया था इस इवेंट में और कैन यू टेल मी द मोर अबाउट इट। तो आप देखना चाहेंगे कि उस जो पर्सन आपको कॉल कर रहे हैं सपोज उनका डेटा क्या है। ओके, तो बजाय इसके कि आप लॉन्ग लिस्ट में सर्च करने जाएं, वी कैन हैव दैट डेटा ओवर। चाहते हैं कि अगर यहाँ पे नेम लिखा जाए लेट्स से आबिद, तो बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आबिद का डिस्प्ले हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। सो हम लुकअप कर लेते हैं इसको VLOOKUP से। आवर लुकअप वैल्यू इज दिस वन, इस वैल्यू को हम लुकअप करना चाहते हैं और टेबल अरे। ओके, हमारा टेबल अरे क्या है और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ओके, इस टेबल अरे को यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो और डाउन एरो करके आपने टेबल अरे को सिलेक्ट कर लिया एंड देन कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अपने फार्मूला को ऊपर फोकस करने के लिए अप एरो की प्रेस कीजिए और ये जो एडिशनल रेफरेंस आया सेल का इसको बैक स्पेस करके रिमूव कर दीजिए। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, इट मींस कि हम इस अगर वैल्यू मिल जाए हमको, अगर आबिद ये वैल्यू हमें इस फर्स्ट कॉलम में मिल जाए तो फिर किस कॉलम की वैल्यू को रिट्रीव करें, लुक करें। वी से कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 की वैल्यू को आप रिट्रीव करके यहाँ पे ले आइए, ब्रैकेट क्लोज कर दें एंड एंटर। ओके, सो आबिद एंड द लास्ट नेम इज रजा ऑटोमेटिकली अपीयर्ड। और अब इसके हम जो बाकी हैं इंफॉर्मेशन वो भी शो करना चाहते हैं। ओके, तो वो तो नहीं आए, तो यहाँ पे हमें वो चेंज करना होगा ना अपना, हाँ इंडेक्स नंबर आप अपना चेंज कीजिए। VLOOKUP आप क्या कर रहे हैं, रेफरेंसेस आपने पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे चूंकि फार्मूला को हमें लेफ्ट से राइट के ऊपर कॉपी करना है, तो आप ये जो जीत कॉलम नंबर 2 की वैल्यू को रिट्रीव करना है, विच इज फाइन। और जस्ट आप एंटर कर दीजिए। नाउ यू ब्रिंग इट टू द राइट, रजा 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 आ गया। यहाँ पे देखने क्या हो रहा है, कॉलम नंबर 2 नहीं है तो कॉलम नंबर 3 की वैल्यू हमें चाहिए विच इज नाउ सिटी, और यहाँ पे कॉलम नंबर 4 की वैल्यू चाहिए। इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपीयर हो गई। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सॉरी, दैट्स इट। सो नाउ इफ समवन पिक्स अप अ फोन एंड सेज माय नेम इज फरहान, कैन आई हैव माय इंफॉर्मेशन। सो आप जस्ट फर्स्ट कॉलम में फरहान टाइप कीजिए। नहीं, सिटी ठीक तरह से शो नहीं हो रहा ना। So the column name is 1 and 2 and 3. Column number is 3, and index number is 3, which looks fine. Okay, so semi के केस में जो information है वो, so यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ से semi को सर्च कीजिए। So if you look at कि semi कहाँ पे है, semi ये हैं और लेवल हिंदी में है। अच्छा ठीक है, यहाँ से इसको फिल्टर को क्लियर कीजिए और यहाँ पे VLOOKUP को मैं दोबारा करना चाहता हूँ। इक्वल VLOOKUP, इस वैल्यू को लुकअप कीजिए, कॉमा, हमारा टेबल अरे ये है, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, कॉमा, अप एरो की प्रेस कीजिए, गेट साइलेंट, साइलेंट। ओके, column number 2, here column number 3, here column number 4, and here column number 5. Everything looks right, huh? Yeah. So then let's look at that again. We have name Abid. Okay. We have name any name Ali. Yes, Ali is there. Do we have name Alisa?
Okay, maybe. Do we have name Usman? Usman Ali from Lahore? Huh? Huh. Yeah. VLOOKUP value table array is this, and column index is 2, and then what is this? Comma. हाँ, यहाँ पे आपको यहाँ से आपको मैच सेलेक्ट करना है कि वो approximate match select हुआ था. We have to look for the exact match, not the approximate match. So this is good to know. So what we do here, comma, and we look for the comma, and we look for the exact match. Okay. Now look at if we have a record like semi, double pindi. So semi. So semi is not there. Retrieve column number 2, and the lookup range is false. So indeed semi is there. Something going wrong. Let's look at Faras. Never mind. We are in technology. Semi. Oh, what's the problem with semi? I can't believe this. Now showing. Excuse me. What was wrong with semi? Okay. Now let's look at. Small and we have capital. I know that should not matter indeed. Let's say we have Hafiz. So Hafiz, Ruhail, Lahore. Everything is showing up. Okay. Now लेकिन हम इसको करेक्ट कर रहे हैं अपने formulas में और हम exact match को देखें, not the approximate match. We should look for the exact match in our formula. So यहाँ पे चाहिए after 4 comma and look for exact match. Enter. हाँ वो खुद ही आ जाता है. या not for exact match को उसने सिस्टम ने देखे ना false exact match. ठीक है. वो कह रहे हैं कि VLOOKUP will find an exact match. We say yes और exact false से आएगा. This is how the Excel is set up. Okay, and here we go. Now we should have all the data retrieved correctly from this table. Let's look at Mateen. So all Mateen data is there. Where is Mateen? Here. Right. Let's look at some other data, maybe Usman. So everything is now properly set up. So this is lookup function, but we have to be careful about कि हम जो lookup range है कॉपी करने हैं. फर्ज करें यहाँ पे आप कुछ और देखना चाहते हैं, सालिम का डेटा देखना चाहते हैं. Here we go. सालिम का डेटा आ गया. ठीक है. Okay. Right. Okay, well, now regarding our topic was data query using VLOOKUPs. We have queried that data और आप इस previous training में देख चुके हैं कि हमने किस तरीके से data type को use करते हुए अपने data the possibilities are indeed seamless when you go for from other sources. Run this wizard from data connections और जो आपके कंपनी में जो स्टाफ मेंबर्स जिनको जस्ट डेटा की क्वेरी से कंसर्न है, they want to just see the final results. So up guys, do subscribe our channel. Next we're going to talk about macros. Thank you.